Hi everyone. Today I want to share with you what I learned through three successful prelims clearances. I gave three prelims in my time when I was a student, and fortunately I was able to clear all three prelims. Now, what was this one common approach that I followed that made sure that I was able to clear very comfortably all three prelims one after the other? There are two major things that I would be talking about. एक एक करके हम दोनों चीज़ों को समझेंगे. And in the next 30, 35, 40 days that you have left for the examination, if you follow this approach, it will enhance your chances of clearing prelims in your first attempt itself. एक एक करके start करते हैं. What are these techniques? I would want to clarify and give you a disclaimer that there is no shortcut to clearing UPSC examination. And these are not shortcuts, but techniques that can help you be more smart in your preparation. So the first thing is revision of whatever you have read already. Now this goes without saying कि आपको रिवाइज तो करना ही है जो भी आपने पढ़ा है, but there are two parts of this revision और दोनों ही parts equally important हैं. The first one is mock tests. Now that you are nearer to the examination, it becomes very important कि आप ज़्यादा से ज़्यादा mock test लगाएं और previous year questions के through questions का orientation समझें if you have not done it already. Mock tests are a big way and a good way of using reverse learning to get closer to the success in the examination. मॉक टेस्ट के बारे में हम डिटेल में अभी थोड़ा नीचे सेकंड पॉइंट में भी बात करेंगे कि किस तरह से लिखने हैं, हाउ डू यू यूटिलाइज देम एटसेट्रा एटसेट्रा. द सेकंड वन इज एक्टिव रिविजन. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एक्टिव रिविजन इन लॉट ऑफ अदर वीडियोज एज वेल. बेसिकली अगर हम शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो एक्टिव रिविजन इज अ टेक्निक वेयर इन इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दी बुक और योर नोट्स डायरेक्टली एंड रिवाइजिंग, आप क्या करते हो, आप एक हेडिंग को बस पढ़ लेते हो. लेट्स से प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट्स प्रोसीडिंग्स. तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स किस प्रोसीजर से चलती हैं, कितने सेशंस होते हैं, कौन हेड करता है, कौन स्टार्ट करता है पार्लियामेंट सेशन को. ऑल दीज थिंग्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स. अगर आप लक्ष्मीकांत उठा के ये पढ़ना शुरू कर दोगे, विल टेक प्रॉब्ली हाफ एन आवर 45 मिनट्स टू कवर दिस एंटायर थिंग. रिविजन भी करोगे तो पैसिव रिविजन में यू आर जस्ट रीडिंग वट एवर यू ऑलरेडी रेड. बट इन एक्टिव रिविजन वट यू आर डूइंग इज आपने पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स पढ़ा और आपने एक अलग रफ नोटबुक निकाली या फिर ऑनलाइन नोट्स निकाले, एक ब्लैंक पेज, और आपने टाइप करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया वट एवर यू कैन रिमेंबर अबाउट पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स. You might be able to recall about 40-50% of the entire content of parliament proceedings. बट जब आप सेकेंड टाइम थर्ड टाइम यही रिविजन करोगे तो आप रियलाइज करोगे दैट यू आर एबल टू रिकॉल 80-90% ऑफ वट एवर इज मैंशनड इन लक्ष्मीकांत. बेसिकली थ्रू एक्टिव रिविजन यू आर मेमोराइजिंग द एंटायर बुक इटसेल्फ, एंड इट्स अ ग्रेट वे ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन बिकॉज ये आपकी मेमोरी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है एंड इट हेल्प्स यू रिकॉल द राइट थिंग्स मच फास्टर इन द एग्जामिनेशन. So the second important thing that you have to do while revising is follow active revision instead of passive revision. This is slower, but it is more effective. So I would recommend if you're spending 2 hours, 3 hours on active revision, it is as good as spending 7-8 hours on passive revision. The next one is learning new things. Now, your learning should not stop even when you're closer to the examination. Your first priority, of course, is revising and remembering and recalling whatever you've already read. But you will not be able to know everything that is around you. That goes without saying. हर किसी को हर कुछ नहीं, सब कुछ नहीं पता होता है, and it's completely okay. But you have to have that desire of learning new things every day so that you're closer to success in the examination. आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ नहीं रहे हो. How to do that more effectively? The best way of doing that is through mock test or test series. I would recommend that you take these two or any one of these two. They're also available offline, Vision and Insights IS test series. They're very good quality, and that is why I'm recommending these two. Now, what do you do? How do you go about taking tests so that you can use these tests to learn new things and to be able to use them in the examination? The first thing that you can remember is to take one test every 3 days, not more than that. आप रोज एक टेस्ट लोगे, you will end up burning yourself out and you will not be able to analyze these tests also. A much better way is to take more time with every test, but make sure कि आप जितना कुछ सीख सकते थे उस टेस्ट से वो आप सीख रहे हो. तो इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मॉडस ऑपरेंडी ऑफ मेकिंग श्योर कि आप एक टेस्ट से मैक्सिमम जूस निकाल पा रहे हो. You take a test for 2 hours. I'm talking just about GS1 and not GS2 at the moment, which is CSAT.
You take a good rest of 1 hour after your test, and then you start with the analysis. Now, this analysis is going to be a minimum of 4 to 6 hours where you do two things. You first understand where you went wrong, where you went right, what are the reasons of marking an incorrect answer, what are the reasons of doing questions correctly. आप proper analysis करोगे हर एक question का. और उसके साथ साथ आप एक और चीज करोगे, एडिंग इन नोट्स. नाउ व्हाट यू आर डूइंग हियर इज व्हाटएवर यू डोंट नो, जहां पर भी आपको या तो याद नहीं था या फिर आपके नोट्स में कुछ मेंशन नहीं है, यू कैन ओपन योर नोट साइमल्टेनियसली. या फिर आपने कोई चीज पढ़ी ही नहीं है, यू स्किप्ड इट कंप्लीटली एंड नाउ यू आर विटनेसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. As soon as you witness it, as soon as you go through the analysis part, you make sure that you're adding them in your notes. और जब भी आप एक्टिव रिविजन कर रहे हो, जो कि मेरा फर्स्ट पॉइंट था, you will come across those points as well. और जब आप एक्टिव रिविजन करोगे, then you will make sure that whatever you have added, new things that you've added in your notes, you're able to remember them and recall them at the right time. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एनालिसिस इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस एंड एनालाइजिंग कि क्यों गलत था, क्यों सही था, बट इट गोज अ स्टेप फर्दर, जहां पे आपको अपने नोट्स में भी एडिशन करना है और अपने दिमाग में भी एडिशन करना है कि ये चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पता थी या पार्शली पता थी, एंड नाउ आई नो समथिंग बेटर. And I have to make sure that I'm able to revise this 10 days, 20 days down the line, and that will happen only through active revision. I hope this clarifies how you have to take your tests. Finally, I want to bring this out that you have to stop worrying if you don't know everything, because when you start taking mock tests, you will realize that a lot of students end up increasing anxiety within themselves, end up feeling a lot more एंशियस एंड लॉट लेस कॉन्फिडेंट जब उनको दिखता है कि उनका स्कोर कम आ रहा है, 70 पे अटक गए हैं, 80 पे अटक गए हैं. डोंट बी वरीड अबाउट ऑल ऑफ दैट, बिकॉज योर लेस स्कोर राइट नाउ इज बेटर देन लेस स्कोर इन द फाइनल एग्जामिनेशन. सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर हायर इन योर प्रीलिम्स, इन योर फाइनल एग्जामिनेशन. It's telling you something. It's better if you are able to understand what it is trying to tell you and work upon that. So stop worrying if you don't get everything right, if you don't know everything, because nobody does. Nobody knows everything in life. And therefore, whatever you're doing in the next 30 days, it's a learning process. If you follow this approach, your learning process is just more targeted towards clearing your prelims. That's the entire approach, entire reason behind following this approach. What do you have to say about this approach, about this method that I personally followed and made sure that I cleared all 3 prelims? You can mention it in the comment section below as well. I'll see you very, very soon with such other videos where I can provide you something relevant as to how do you clear your examination easier, better, and faster. And make sure that you're not making the mistakes that majority of students are making, because there's so much content out there when it comes to UPSC and so little guidance available, so little right guidance available as to how to not make the mistakes that other students are making. I'll see you very soon with another video. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.